I welcome to this pre-welcome presentation. So how first, let me tell you, this is a hybrid presentation which is happening. There are parents who are joining us online and there are parents which are joining us physical. Now, this has now become a new normal. जो भाषा बोलते हैं, post-COVID, this has become a new normal. And it would give you a demonstration of how these hybrid sessions will be conducted at Universal Tutorials. So this is how it is. Now, what people in the online, what you would see over here, what you're seeing is a board. And if I write anything, आपको आपकी screens पे बहुत clearly दिखेगा कि मैंने क्या लिखा है. You would be able to see all of it very clearly. Nilesh, can you spotlight me? आपने मेरे को spotlight कर रखा है, Nilesh? 1 second, sir. I'm Sharad. You are the host. Make me host, Sharad. And Nilesh, you make sure that you're responding to the chats. Yeah. And make me the spotlight. Chaliye. So this is what you would see a demonstration in the online people. This is what you are seeing. आपको दिख रहा है कि मैं. So this is like a teacher standing in front of a board, and we've created this entire setup in such a way. I realized when we went in COVID, most of the teachers are not so tech friendly. अगर उनको बोर्ड पे लिखने की कैपेबिलिटी दी जाती है, so then वो बहुत अच्छे हो जाते हैं. जैसे मैं भी, I am 50-year-old, tech friendly हूँ, but tech is going very fast. So tech is going really very fast. So जैसे अभी मेरे को एक असिस्टेंस की जरूरत थी कि भैया तू जरा ये ठीक कर दे जिससे वो सब ठीक चालू हो जाए. So we've created this online thing this way कि इसमें teacher will continue writing the way he or she is writing. इसके साथ साथ your online experience would not be damaged, and physical experience is also. तो आप physically यहाँ पे खड़े हैं और online वाले मेरे को उधर देख सक रहे हैं, and then we will share screen and PPT चालू करेंगे. So this is what is the online setup. Now ये जो PPT है, this should last. Will be taken by 2 people, myself and my another fellow director, Mr. Manish Saraf. Will be addressing you. और क्या लेंगे वो मैं PPT में चालू करता हूँ. So Nilesh, are we all good to roll? Yes, I just received few complaints that you're not audible to them. About 3 complaints. So I think you can just ask everyone to put up the thumbs up if you are audible to majority. Okay. Online people, am I audible? अगर अभी नहीं वो बीच में I was not audible because we were setting it up. But yes, I have received thumbs up. Nilesh, I think it's all good. And you can address the chats को आप कर रहे हो? Yeah, I'm doing. चलो ठीक है. So let's get started with this. Online people, please confirm, are you able to see the pre-welcome slide? Nilesh, just confirm me back. सबके thumbs up आए क्या? Yes, sir. It is properly seen. Pre-welcome slide along with you. ठीक है. So, as I said, this would be conducted by myself, Anubhav Sanal, and my fellow colleague Manish Saraf. We'll be the 2 people who will be conducting it. Now, let me not waste time, directly get into कि हम क्या करने वाले हैं इसमें. What is my today's agenda? Today's agenda is first very briefly tell you not more than 2 minutes about Universal Tutorials. You are anyway aware about Universal Tutorials, but we'll very briefly tell you about Universal Tutorials. Then we give you a preview of UT program 23-24. ये क्या program है जिसमें आप join कर रहे हैं? The objective of calling you today is कई parents and ये मैं हर साल करता हूँ. It's not कि इस साल करता हूँ, लेकिन we've been doing this for so many years. तो चूंकि summer है, ये है, आपको कोई अपनी travel booking करनी है, कुछ करनी है, तो we want to give you a bird's eye view कि हम कैसे program run करने वाले. It would not comprise of details. It would comprise of big picture. Details would come to you in the month of April, March end, when we actually formally begin the program. So right now it would be more of a big picture. It is not a detailed session today. So वो हम देने की कोशिश करेंगे आपको.
Then we'll talk about a concept which we have curated over a period of years, UT concept of we make careers. तो मैं इसके बारे में बात करूंगा. What is this concept? ये सब मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको. And then finally we'll get into. Arey, please don't keep me as a host. I am unnecessarily getting this window which opens up. You are not the host, sir. UTHO Studio is not the host. Chaliye. Then we'll be talking about our results and finally an open house question answer session. So let's get into about universal tutorials. About universal tutorials, well, about UT, it's been 24 years since Universal Tutorials was started. December 1998 is when I started this organization. It was an humble beginning with 3 students, but we've come a long way, and we've actually come a very long way. We have coached in this span of 24 years, we've coached upwards of 35,000 students. And there are students all over the country and all over the world now, our alumni who are all over the world. Navi Mumbai, we are the largest coaching institute, and in fact, we've been a very good survivor of COVID. In COVID, there are big brands which went down. Mahesh Tutorials khatam ho gaya, Sinhal classes khatam ho gaya. There are lots and lots of rows and lot of academies. I think idhar main mention karna chahunga. I am an MBA Finance. मैं भी जब अपनी क्लास चालू करी थी तो मैं बोलता था जैसे बैंक्स करते हैं, मेरे फादर के साथ आर्ग्यू करता था कि पापा क्यों अपने को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है. लेट्स जैसे बैंक्स करते हैं, लेट्स हैव आर्स इज अ वेरी रियल एस्टेट हेवी बिजनेस. बट मेरे फादर जैसे पुराने होते हैं वैसे फादर नहीं, लेट्स ऑल बाय आउट ऑल द प्रॉपर्टीज एंड लेट्स डू बिजनेस ओनली इन दैट. अगर हम वो नहीं करते तो हम भी शायद खत्म हो जाते. बट सिंस ऑल आवर प्रॉपर्टीज आर बॉट आउट प्रॉपर्टीज including this grade, we were able to survive the COVID. Not only will we survive the COVID, we've actually become better in COVID. So that's precisely what happened with us in these 35,000. ये unnecessary क्यों बार-बार ये एक आदत है, इसको अपन ऊपर रखते हैं. अगर ये आता है आएगा भी तो it will not bother us. चलिए, we've 7 branch locations. We are basically covering the entire Navi Mumbai. We start with Airoli से लेके कोपरखैरने वाशी, Sanpada, Nerul, Kharghar and Panvel. This is what it is. And जो मैंने बोला, COVID allowed us an opportunity of going pan India. Now we are actually serving pan India. We have a lot of online presence in the pan India. We have students coming from Northeast, from Jammu and Kashmir. We have professors sitting all across. Our test series product has really become a pan India product. So that is something which COVID allowed us to do. So that's now हम किस में काम करते हैं, what all we work in. We work in board exams. Board exams, so that's why you are largely here. We work with CBSE and ICSE in 9th, 10th and 12th. This is what we work with, board exams, because that's one vertical we work in. The second vertical we work is in Indian exams. We coach in IIT JEE. We coach NEET, that is medical entrance exam. We have our own integrated junior college over here. First floor, aap dekhenge, it's our own junior college, and we do wonderfully well in those areas. Plus, we also do non-medical, non-engineering entrance exams, IPM and management. We do CA foundation. So these are the Indian exams which you can prepare for. So we have a host of these exams. And we also have a vertical, which is study abroad vertical. Study abroad, we do GMAT, GRE, SAT, TOEFL, IELTS, वो सारे exams करते हैं, plus counseling. So these are the 3 broad verticals Universal Tutorials works. You guys are today joining us in the board exam vertical, which is primarily the 9th and 10th. Now, my colleague Manish will help you, make you understand how you would get advantage of these various verticals, where we groom you, कैसे हम आपको initial years में ही इस सब चीज की idea देंगे, so that you can make a good career decision with us. चलिए, that's about Universal Tutorials. Now, as I said, I'll keep it very short and sweet.
Now let's move on to 2023-24 program. Isme, I would say it's a most powerful program that you've joined. So thank you for trusting us with your kid for the standard 9th and 10th with us. So it is a most powerful program. Now, why do I say it's a most powerful program? Because it's been curated since last 24 years. Curated means it's gone through the 24 years of churning. And over a period of time, we've actually curated it. मैं आपको बात बताऊं तो curated का एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं लेता हूं. जब मैं सबसे शुरू में काम चालू किया था, these classes used to be largely बच्चों को छुट्टी नहीं थी. Sundays को बुलाते थे, सुबह बुलाते थे, 7 बजे चालू करते थे, and used to do long hours and things like that. But as we went into 24 years, we've realized one thing has changed in the tuition industry, and one thing which has changed in a big way is the well-being of a student. I can identify the parents' generation, parents can identify with me, and I can identify with the parent generation. So we parents take pride. अरे हम हमारे जमाने में ना सुबह जल्दी उठ के BST की बस पकड़ के ST की बस पकड़ के अग्रवाल क्लास जाया करते थे और वहां पे इतनी जल्दी करते थे. तुमको सब हाथों में मिलता है. So yes, well-being is a big concern. So our program has undergone a well-being pattern. And well-being is that we've aligned our classes more of 2-hour classes per day. इससे ज़्यादा class नहीं. Sundays को इतनी ज़्यादा classes नहीं होंगी. Holidays मिलते हैं. So comparatively, the program has become more compact, more efficient. अच्छा, with COVID, a lot of efficiency came into the program. पहले जैसे अभी हो रहा है. पहले सारे parents physically आएंगे. अभी there is a host of parents who are sitting online. So ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे components हमने create कर दिए हैं कि जहां पे delivery पूरी classroom में हो रही है, लेकिन आपको teacher से मिलना है. अब आप बैठे हो वाशी में और आपको teacher से मिलना है. Teacher stays at खारगर. पहले pre-COVID उसको खारगर से teacher को वाशी भेजना, बच्चे को वाशी में बुलाना, again sometimes उतना difficult होता था. But now what we've done is we've used these Zoom sessions. कि आप मिल रहे हो, physical classroom delivery हो रही है, लेकिन contact sessions, doubt solving आप टीचर से one-on-one Zoom पे करते हैं. That's very efficient. पेरेंट्स से मिलने का काम हमने Zoom पे कर लिया कि पेरेंट्स से अब एक बार आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया. Now you don't want to make a travel 2 घंटा 1 घंटा travel में वेस्ट नहीं करना है. So that way the program has been very excellently curated and where a lot of components. अब एक हमारा we've launched a test prep. हमारा एक tech सपोर्ट हमने दे दिया है, which is उड़ान, which is our own home developed. पहले बच्चों को कंपल्सरीली टेस्ट लिखना है. अब बच्चे can write it at your convenience of home. अभी जब हम टेस्ट में लिख रहे हैं तो मालूम पड़ रहा है बच्चे रात को 11 बजे, रात को 12 बजे वो बैठ के घर पे टेस्ट लिख रहा है. We are evaluating and giving it back. So that kind of conveniences have come in, and that's what has curated the entire program in a very big way. So that's why it's become a very powerful program. Moving forward, we are able to give you 3 चीज का फोकस एक साथ एक ही जगह पे दे पा रहे हैं. That we are not just talking about ऐसे घोड़े के वो लगा के. This is what I hate about. मैं शुरू से इसको अच्छा नहीं लगता है मेरे को. कि बस अपन IIT की पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं. नहीं, this is what I'm not about. So we are essentially focused in board plus foundation plus career. अच्छा, अब हमने इसको क्यूरेट किया है where once you come in, अगर कोई 9th standard में हमारे साथ थे तो you would have seen हम लोग हर Sunday webinars करते हैं and there we educate the student onto multiple themes. अब ये webinar is also a byproduct of COVID. पहले ये webinar IMEI में हुआ करता था जहाँ पे आपको जाना पड़ता था. जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर के convenience से you can attend these webinars. आपको बहुत सारी चीजें के बारे में मालूम पड़ेगी. So this is what you are joining in. अब my colleague Manish would take care of board plus foundation plus career के बारे में detail में वो ये बताएंगे. Now I'll get into जो मैंने आपको बोला था, promise किया था कि I'll talk about those. जाता है. चलिए. So let's talk about when are we starting. So I will talk about next. I will be talking about when are we starting. इसके बारे में बात करेंगे. We'll be talking about subject flexibility and we'll be talking about online classroom options. क्या-क्या रहेंगे online या classroom physical options कैसे रहेंगे. So let's talk about first start dates.
Start dates के बारे में, तो we are proposing 2 start dates. And why these are 2 start dates? One is 20th March 2023 and second is 2nd April 2023, because a lot of schools have not yet announced their final. So आपको इस महीने my academic team will get in touch with you, find out कि आपके स्कूल में कब छुट्टियां मिल रही हैं, कब आपके एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं. Once वो clarity आएगी, we will fix. अगर किसी स्कूल के सब कुछ बहुत जल्दी wrap up कर रहे हैं, तो we may start as early as 20th March. But there is most possibly शायद ICSE would follow this 20th March and CBSE may follow a 2nd April date. अब ये would be during the course of the 3-4 weeks, you will receive emails from my office where we will be asking you to give your data from school. Now, इधर मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ. आपके स्कूल में क्या हो रहा है? Please don't assume. It's an assumption which you can take, but I would politely and kindly request don't make that assumption. मेरा स्कूल से कोई connect नहीं है. In fact, schools do not like coaching classes. For them, we are stepmotherly treatment मिलता है हमको. अगर हम उनसे approach करने की कोशिश करते हैं, we are being shut down. So मेरा approach with school is you guys. So मेरी आपसे request रहेगी कि आपके स्कूल में कुछ भी होता है, please send us to the academic team. And we will then are more than happy to adjust with these. तो इधर भी आपको मेरी team will get in touch with you and will ask you कि आपके स्कूल में कब exams खत्म हो रहे हैं, कब आपके schools वापस reopen हो रहे हैं, and accordingly based on that we will propose a date. But right now travel plan के लिए you can safely assume this. And मेरे को ऐसा लग रहा है from so many years of experience, I think ICSE would start kick off from here, CBSE would largely kick off from here. This is what I'm expecting. But it may change slightly. Next, initially up to 16th of April, we will have classes only for maths and science. So pehle we would start with only maths and science classes. And then we would get started with all subjects from 17th April onwards. This is the normal thing which we follow every year. So tab fir sare subjects aapke kick in ho jayenge. So maths and science is slightly portion heavy. So initially maths and science chalu hoega. And then 17th April onwards, everything will kick off. So this is what you can expect. Let's move ahead. Subject flexibility. आप subject कैसे choose कर सकते हैं हमारे यहाँ पे? Subject flexibility आप हमारे यहाँ पे जो चाहें वो pick कर सकते हैं. You can pick. ये अलग-अलग subjects हैं, math, science, social, English, Hindi, Sanskrit, Marathi, economics, commercial application. ऐसे अलग-अलग हैं. These are all the subjects we offer. Now you will realize we are not offering French, we are not offering German. These languages we do not offer. अब कई बार parents पूछते हैं ये क्यों नहीं offer करते हैं? Because I do not get a reliable faculty in these subjects. So since I do not get, I do not offer. I've tried a couple of times. बल्कि 2 नहीं 4-5 बार try किया and I have failed miserably. वो teacher बहुत जल्दी छोड़ के चले जाता है. And then we are not able to deliver quality. So we abstained ourselves from doing those. So those are the ones which we do. But ये सब करते हैं. Now, maths and science has to be taken together. It cannot be split. Social, English, Hindi, Sanskrit, Marathi, ये सब आप cherry pick कर सकते हो. You want to pick one subject, you want to pick 2, you want to pick 3, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो. Generally, the popular option is people pick 4 subjects: maths, science, social, English, या एक language. मतलब maths, science, social and एक language. That's what you must have generally taken in admission. तो वैसे बच्चे admission लिए. आपने अगर कुछ ऐड करना है तो you can always add and remove all the way up to, जैसे मैंने टाइम बताया, April तक you have time, you can add and remove, that you can do. You can pick any combination, online or classroom. ये भी अब ये मैं समझाता हूँ online और classroom का combination, and it's important for you to understand आपको कैसे pick करना है. So let me, yes please. There are a couple of empty spaces. Please squeeze it in between if we can make space. Yes, इधर ही आ जाइए, शुरू में ही. Yes, thank you. चलिए. Subject flexibility, sample combinations. So let me ये थोड़े से इसको और कम करते हैं बार-बार ये. So you could do ये जो black में दिया है कि आप maths and science, SST, English, Hindi, Sanskrit, Marathi, सब कुछ आपने pick किया है. All of them you are doing in the class. All of them you are doing in the class. तो अब ये कैसे होएगा? ये slide पे नहीं है. Online people also confirm ये सब कुछ
बोर्ड पे कर रहा हूं मैं. आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी. नीलेश प्लीज कंफर्म आपको दिख रहा है. सो टिपिकल कैलेंडर कैसे होगा? टिपिकल आपका हफ्ते का कैलेंडर वुड बी लाइक दिस. ये मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा एंड दैट इज नॉट ऑन द स्लाइड. नीलेश प्लीज कंफर्म ये दिख रहा है? Yes, I have seen your board. ठीक है. सो अब अगर कोई मैथ्स एंड साइंस लेगा तो मैथ्स एंड साइंस का जैसे टिपिकल वन सैंपल, दिस इज अ सैंपल. जरूरी नहीं है सबको ये होएगा, बट दिस विल बी अ सैंपल कि यहाँ पे मैथ्स एंड साइंस हो रहा है, मैथ्स एंड साइंस हो रहा है, यहाँ पे मैथ्स एंड साइंस. तो हफ्ते में 3 दिन, 3 days इट वुड बी मैथ्स एंड साइंस. दिस टाइम टेबल वुड बी फिक्स्ड फॉर योर ब्रांच. अगर खारगर है तो खारगर में सपोज ये हो रहा है तो ये फिक्स हो. Then 1 day would be allocated for one subject. This would be allocated for this, and this would be allocated for the fifth subject. So this is how your typical timetable would look like. Now this could be एक branch का timetable, खारगर का. अगर कोई दूसरी ब्रांच होगी तो उसमें ये sample 1 है, ये sample 2. That timetable could be कि they are following a maths and science on not on a Monday, Wednesday, Friday. They are following maths and science on a Tuesday, Thursday, Saturday. And for them, English happens to be on a Monday, SST happens to be on a Wednesday, and Hindi happens to be on a Friday. Now, once all of this is printed in our folder, which you took at the time of admission, branch-wise सब बना के दिया हुआ है. So this is how. Now, अब what is coming now in the slide, if you will see what is coming in the slide. Nilesh, अगर कुछ भी आपको लगे कि it's not going optimal, please help me because मैं आप ही को देख रहा हूँ screen पे. Yes, it is going optimal, but just I'm getting few feedbacks that I'm not able to enlarge and see it. So it probably maybe setting at their device. Okay, so please help them and do that. Yeah, I'm trying. और मेरे को कुछ करना होगा तो मेरे को बोलना if you want me to stop in between or something. So you know because I am addressing the physical people. Online का आप help करिए मेरी. Yeah. I'm trying to do that. Yeah. चलिए, thank you. आगे बढ़ते हैं. Now this is one combination. अगर आप देखेंगे, blacks are the ones with the child has decided to attend in physical classroom, and red he is chosen कि वो online attend करेगा. So if you'll understand क्या कर रहे हैं कि maths and science वो classroom attend करना चाहता है और social studies वो online attend करना चाहता है. English वो online attend करना चाहता है, हिंदी संस्कृत वो online attend करता है. Can you do this? Yes, you can. Yes, you can do this. This is what it means by saying online plus classroom. Online plus classroom. I repeat, तो कैसे होएगा? Suppose let's take sample 1. Sample 1 में खारगर का बच्चा है, तो खारगर का बच्चा ये जो गोले कर रहा हूं मैं, इस दिन वो खारगर क्लास में आता है और फिजिकली अटेंड करता है. और जो मैं रेड पेन, तो ब्लू है मेरे पास, जो मैं ब्लू कर रहा हूं, जो यहाँ पे रेड है, ये वो इस दिन क्लास में नहीं आता है, इस दिन वो अपने घर से क्लास अटेंड करता है सेम टाइम. तो कुछ बच्चे हैं जो फिजिकली यहाँ पे आ रहे हैं उस दिन, but he chooses to come online. This is what it is. So this is a sample which you can do. आप ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते. Can you switch? Yes, you can switch. But एक चीज आप नहीं कर सकते, हम वो नहीं अलाउ करते. क्या? आपने चूज किया मैथ्स एंड साइंस फिजिकल, आपका बच्चा आज कहता है मेरा आज मन नहीं कर रहा, मैं क्लास में नहीं जा रहा, मम्मा मैं आज घर से ही अटेंड करूं. दैट इज नॉट. आइदर यू डिसाइड कि वो सब्जेक्ट आप पूरा ऑनलाइन अटेंड करिए या वो सब्जेक्ट आप पूरा ऑफलाइन अटेंड करिए. वी विल नॉट अलाउ, क्योंकि इसमें ये कन्वीनियंस हम हमारी हायर क्लासेस में देते हैं, इन प्रोडक्ट्स लाइक एसएटी वगैरह में देते हैं, जहां पे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ी मेच्योरिटी ज्यादा होती है. हमने देखा है छोटी क्लासेस में, हमने एक साल ये करके देखा है, and the kids they take parents for a ride, they take, और बच्चों को तो समझ नहीं है, they take professor for a ride, they take parents for a ride, and नुकसान करते हैं. So we do not offer this flexibility. So please understand, and we would not offer this flexibility. Now कि 2 दिन उसने फिजिकल अटेंड करी, तीसरे दिन वो क्लास ऑनलाइन करना चाहता नहीं. सब्जेक्ट आप जो भी शुरू में बोलोगे. अच्छा,
अगर आपको लगता है मिडिल ऑफ द ईयर यू डिसाइड कि सर अनुभव सर अब मैं पूरा का पूरा ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहता हूँ, हाँ मैं एक बार ये स्विच अलाउ कर दूंगा विद योर परमिशन कि भाई आपको स्विच करना है, मैं स्विच कर दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बट दिस इज व्हाट इज द ऑनलाइन एंड फिजिकल का ये। लेट्स मूव अहेड, इसी में और आगे चलते हैं। एक और ऑप्शन मैंने क्रिएट करा है, कैन यू अटेंड ऑल ऑफ देम ऑनलाइन? यस यू कैन ऑल अटेंड ऑल ऑफ देम ऑनलाइन, सब कुछ आप ऑनलाइन भी कर सकते। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम ऑनलाइन विद अस? ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। जब कोविड था तो ऑब्वियसली वी वर डूइंग 100% ऑनलाइन। कोविड खत्म हुआ, ये हुआ नहीं, 100 में से 2 बच्चे, 100 में से 3 बच्चे शायद ऑनलाइन, the remaining 97-98% physical. But are we geared up for both of them? Yes, we are geared up for both. But largely people are coming physical, and हमारे सब courses are available physical format में available. So ये हुआ एक option. Next आगे बढ़ते हैं। Typical class preview, ये मैंने already दिखा दिया है आपको। Yes, ये मेरे को इधर दिखाने की जरूरत नहीं थी, मैं याद नहीं रहा कि मेरे स्लाइड पे। तो जो मैंने बताया, ऑल क्लासरूम, तो मंडे को मैथ्स एंड साइंस, वेडनेसडे को मैथ्स एंड साइंस, फ्राइडे को मैथ्स एंड साइंस, ट्यूसडे, ये ऐसे एक टिपिकल है जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो ब्लैक है वो पूरा क्लासरूम कर रहा है, तो रेड ऑनलाइन कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ आई विल टेक अ पॉज हियर फॉर अ मिनट। अगर किसी के कोई इधर क्वेश्चंस हैं, आई विल एंटरटेन 1 or 2 questions and then I'll move forward. Any questions at this point of time in the physical room? Sir, one of the earlier slides, आपने कहा था कि you are geared towards 9th, 10th and 12th board. So my question is about 9th. Is it still a board? Because in the school they didn't say that it's a board exam for the final. नहीं, 9th is never a board exam. 9th never was a board exam. But 9th में क्या होता है? I'll very quickly answer that question. 9th में क्या होता है साहब? CBSE में ये वाला पूरा आपका 8th तक आपके स्कूल में सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। 9th में for the first time it's a full year exam. So papers come from the board but are conducted by the school, corrected by the school. Actually, it's in the ICSE. तो ICSE में भी 2019 तक ऐसा होता था। कोविड में they stopped that practice. We are expecting they should begin the practice, but we don't know whether they'll begin this practice. Not be informed by the school. It will be informed. मतलब वो तो काउंसिल खुद इन्फॉर्म करता है। 2019 तक ऐसा होता था, then COVID में they stopped that practice, but we are anticipating for them to start that practice again. But अभी तक कोई circular नहीं आया। One Hello. more question. Excuse me, Yes. hello, am I audible? Yes, please ask. Actually, sir, in the last, say probably last 2-3 years, 2020, 21, 22, what has been your experience in terms of the performance of the kids online vis-a-vis the classroom? Any significant performance difference have you noticed? Absolutely, madam. छोटे बच्चों में ऑनलाइन नहीं इफेक्टिव है, छोटे बच्चों में फिजिकल इज द वन व्हिच इज इफेक्टिव। आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो जैसे अभी आप मेरे को दिख नहीं रहे हैं, मैं आपकी आंख में आंख डाल के देख नहीं सकता हूँ, सिर्फ मेरे को एस चंद्रा करके नाम आ रहा है। तो बच्चों के साथ तो बहुत सारी बदमाशी होती है। जब मैं फिजिकल पढ़ाता हूँ तो फिजिकल वो बच्चे की आंख में देख के मैं बहुत क्लियरली समझ जाता हूँ कि उसको समझ में भी आ रहा है या वो हवा में है। सो आप मेरे से एज अ टीचर पूछेंगे, दिस सेगमेंट में हम पढ़ा रहे हैं 9th-10th सेगमेंट में ऑनलाइन की इफेक्टिविटी बहुत पुअर है, फिजिकल की इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो हमारा हायर सेगमेंट है व्हिच इज आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट, उनमें ऑनलाइन की इफेक्टिविटी है, क्योंकि तब बच्चा बहुत मोटिवेटेड हो जाता है, तो बच्चे का टाइम सेव होता है, तो फिजिकल की जगह ऑनलाइन भी कई जगह काम करता है। जैसे हमारे IIT बैचेस में हम जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको हम लास्ट में सब क्लासेस ऑनलाइन कर देते हैं, सारे सेंटर्स को क्लब करके, जो हम फिजिकली पहले नहीं कर पाते थे। तो वो बच्चों को हम इकट्ठा करके उनको बहुत फोकस्ड ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, तो उसमें हमको बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बिकॉज हम उनको इकट्ठा कर पा रहे हैं। बट Thank you so much for the honest answer, sir. Answer is one more question and then I'll move on. There was a question, yes. Yes, pre-recorded lecture facilities are available, sir. What we do is जैसे अब ये पूरा entire thing is being recorded and it will go on to our YouTube channel and YouTube channel पे वो index होके मिल जाएगा, आप कभी भी जाके उसको देख सकते हैं। Yes, that's available. बट क्या उसका कुछ यूज होता है? रियली स्पीकिंग बहुत कम यूज होता है। वो एक हाइजीन फैक्टर हो गया, बोलने के लिए हाइजीन है। आपने अभी पूछा, मैंने हाँ बोल दिया, यू आर सैटिस्फाइड।
बट कितने लोग उसको एक्सेस करते हैं सर? 100 में से 1.5% के आसपास का एक्सेस, बहुत कम एक्सेस है। एक हाइजीन फैक्टर है साहब। चलिए लेट्स मूव ऑन एंड कंटिन्यू। ये ना हर बार इसको क्लिक करना होता है तो ये आगे। चलिए लेट मी गिव यू एक बर्ड्स आई व्यू जो मैंने बोला था। तो हम वी डिवाइड दिस एंटायर हमारे पूरे एकेडमिक ईयर को, आई वुड डिवाइड इट इनटू 5 डिस्टिंक्ट पीरियड्स और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक अप्रैल का महीना, एक मई का महीना, एक जून से नवंबर का पीरियड और एक नवंबर से फरवरी का पीरियड। तो 5 नहीं हुए, 4 ही हुए। 1 2 3 4 पीरियड्स हैं जिसमें हम इस पूरे हमारे डिलीवरी को डिवाइड करते हैं। नाउ क्या हो रहा है? अप्रैल जैसे मैंने बोला 2 अप्रैल से वील स्टार्ट, द 20th मार्च से वील स्टार्ट, सो दैट्स द स्टार्ट डेट। क्लासेस कब होंगी? क्लासेस हमेशा इवनिंग में। क्लासेस के टाइमिंग्स आर फिक्स्ड, हमारे एडमिशन फोल्डर में दिया हुआ है। 4:45 से 6:15 है, 4:15 से 6:15 है one slot, 6:30 to 8:30 is another slot। 2 घंटे की क्लासेस होंगी। somebody coming at 4:15, other people coming at 6:30 depending upon कौन से स्टैंडर्ड, कौन से बोर्ड में हैं आप, कौन सी ब्रांच पे हैं। These are evening classes and tests happening on Sundays. Entire month of April, this is how we'll operate. अब डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने सब्जेक्ट लिए हैं। आपने मैथ्स एंड साइंस लिया है तो आप हफ्ते में 3 दिन आ रहे हैं। आपने मैथ्स साइंस सोशल लिया है तो हफ्ते में 4 दिन आ रहे हैं। मैथ्स साइंस सोशल इंग्लिश लिया है तो 5 दिन आ रहे हैं। लैंग्वेज भी लिया है तो 6 दिन आ रहे हैं। दिस इज हाउ इट गोस। एंड संडे को वी विल हैव बूस्टर्स ऑपरेटिंग और टेस्ट्स ऑपरेटिंग। बूस्टर्स आर समथिंग जो मेरे कलीग मिस्टर मनीष समझाएंगे आपको। तो दैट इज हैपनिंग ऑन संडेज। तो ये हुआ। मई में क्या हो रहा है? मई में वी गो इनटू एक्सटेंडेड क्लासेस। एक्सटेंडेड क्लासेस इज बिकॉज आपके स्कूल में छुट्टी है, समर वेकेशन है, सो द क्लासेस फॉर 10th स्टैंडर्ड वुड इंक्रीज फ्रॉम 2 आवर्स से बढ़ के वो 6 घंटे की क्लास। इंस्टेड ऑफ इवनिंग क्लासेस दे गो इन द मॉर्निंग। ऐसे 4 हफ्ते चलेंगे मई। 4 weeks in May we will go in the morning. 9th के लिए will not really go in the morning. 9th के लिए we would go in the afternoon, but 2 से 3 घंटे की 4 घंटे की क्लासेस। 9th को समर वेकेशन भी मिलेगा। You will have 2 weeks of summer vacation, but 10th को नहीं मिलेगा। 9th ICSE will not get a summer vacation. 9th CBSE will get a summer। 9th ICSE को नहीं मिलेगा। So that's about plus Sunday के टेस्ट चलेंगे। So this is how। तो May में can you plan और कोई वेकेशन? नो, डोंट प्लीज, डोंट प्लान अ वेकेशन एक्सेप्ट 9 CBSE, डू नॉट प्लान अ वेकेशन। सो मई में डोंट प्लान अ वेकेशन। नेक्स्ट, जून से नवंबर स्कूल्स हैव रीओपन, सो वी गो बैक टू दैट इवनिंग क्लासेस शेड्यूल एंड संडे टेस्ट। जैसा अप्रैल में कर रहे थे ऐसा पूरा का पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड मिड नवंबर तक, अराउंड 10-15 नवंबर तक वी वुड फिनिश द एंटायर पोर्शन। हमारा पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा एंड वी वुड हैव मूव्ड टू एंड रेडी फॉर नवंबर से फरवरी में। अब क्या होगा? नवंबर से फरवरी में नो क्लासेस। अब इवनिंग में कोई क्लासेस नहीं। देयर विल बी ओनली डाउट सॉल्विंग क्लासेस, एक्स्ट्रा लेक्चर्स, रिवीजन क्लासेस एंड बोर्ड मॉक टेस्ट वुड स्टार्ट। एंड वी जनरली डू अबाउट 4 मॉक टेस्ट। जैसे अभी बच्चे हैं, नवंबर में 1 सीरीज, दिसंबर में 2nd सीरीज, जनवरी में 3rd सीरीज, फरवरी में 4th सीरीज। तो पूरा बोर्ड अपन 4 बार लिखे। So this is how the typical pattern is. I'll again stop for 1 minute before I give my thing to my colleague Manish. Manish is already here. Before I give it to Manish, any questions at this point? Yes. Sir, in North Point School, before the 10th board exam, the 10th standard academic year, the 9th is getting finished by February 24th, all the exams. So is there any plan to start early March? So that's why that early date is there. But not early, first March. नहीं, 20th से पहले नहीं चलेगा। Because हाँ। नहीं मैम, नहीं, रायन भी हमारा, रायन, एपीजे इन सब से अलाइंड है, तो वो 4 weeks के हिसाब से ही रहेगा। नहीं मैम, नहीं, it's aligned to that. Don't worry on that. Do not worry on that. Generally, it's 4 weeks मिल जाते हैं हमको, and हम 4 weeks करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मई में। I am talking about May में vacation. And May में it's a 4 week vacation clear. 4 week का clear window मिलता है नहीं। I am very confident on that. अगर नहीं होगा तो वो हम आपके हिसाब से एडजस्ट करेंगे।
जैसे डीपीएस एक हफ्ता आगे करता है तो उन बच्चों के लिए अलग से हम करते हैं एडजस्टमेंट। अगर ऐसा स्कूल करेगा तो जैसे मैंने बोला वो आप हमको अगर बताएंगे तो हम जरूर करके लेंगे। चलिए, so that's it. Now I think I'll invite my colleague. I will do a stop share here, and Sir, I'll one now small invite my question. colleague. Sorry, sir, one Manish. small question. November to Feb, you said there will be no classes, only tests. On which day those tests will be? मतलब वो कब होगा test? Sunday को? And tests on evenings and Sundays. Okay, okay. Classes के tests होंगे, but they will be pre-decided, announced, and वैसे होंगे. No classes मतलब तब बच्चा डाउट सॉल्विंग करेगा हमारे साथ, रिवीजन करेगा, एक्स्ट्रा लेक्चर्स करेगा, एंड टेस्ट्स करेगा. Sir, one question from my side. Hello. Let that be the last question, and then I'll invite my colleague Manish to start. Yeah. Please बोलिए sir. अच्छा सर, ऐसा है कि अगर supposing if what is it, the kid falls sick or supposing there is some untoward incident in their house, how will be the institute take care of such situations? Two methods. One is recorded lectures. Second is extra lectures. You can request for extra lectures, and the institute will provide you Zoom पे one-on-one extra lectures for your child. Okay, sir. Thank you. चलिए Manish sir, good morning. सर गुड मॉर्निंग सर आई वुड वांट कि ये कैमरा चेंज करके क्लासरूम पे फोकस कर दें. जी सर. ये कैमरा का जो एंगल है खारघर का वो बोर्ड से हम क्लासरूम पे कर दें सर. आई डोंट नीड बोर्ड. हाँ अभी करता हूँ सर, अभी करता हूँ. जी यस सर, थैंक यू सो मच. सो आई हैव गॉट द कंट्रोल. मुझे बताइएगा सर, कैन यू सी मी सेंट्रली ऑन योर स्क्रीन? यस. Thank you. So I'll control the entire screen. Good afternoon and namaste everyone. People who have joined us physically and parents and students joining online. This is Manish Saraf. And thank you Anubhav sir for taking the first part and taking it in detail. Now my job has been made easier because I'll be taking a small portion. So I think another 15 minutes or so. I should be able to deliver my agenda and then we go for open house. So I will request everyone to not write anything in the chat box because none of us would be able to read unless and until you're facing a problem. You can address your doubts directly to Mr. Nilesh Bhagwat. He's there on your screen. So you can write to him and he'll help you whatever he can through the chat. So let me start. My agenda is where I'll share with you what is this concept that we have at UT where we say we make careers. So like sir was saying that tuition classes over the years, they have changed. बहुत बदलाव आ गया है और काफी changes आ गए हैं tuition classes में, हम evolve हो गए हैं. So you know UT has done the same. We have changed with time and we are no more a tuition class. So what you have joined at Universal Tutorials is you have joined possibly a learning institute where we are helping child with inside classroom school studies, and then there are lot of other avenues where we help the child to basically become successful after 12th wale careers mein. So we make careers is one of the approach that I'm going to share with you. So under this approach, the strategy is, or whatever we do, if I have to present it in a nutshell, it is basically exploring what is the potential, what is good for a child, then focusing on those good things, the fitment things, ensuring that you do well in board exam because this is one common thing which runs across career. आपको 10th के बाद कुछ भी करना है, 10th, 12th boards बहुत important है. So ensuring that all board exams are taken care and you prepare with best faculty for not only board exams, but also for careers after 12th and you achieve your desired success. So this is the mool mantra I can say by which we have created these solutions and अब इतने साल हो गए हमको ये deliver करते हुए and we say that we are an institute where we make career. तो ये concept आपको समझाने के पहले this is a systematic approach which I'll say जैसा साइंस में होता है आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप इंप्रूव करते जाते हैं. Similarly, UT के 24 साल past 24 years have provided us that where our cumulative intelligence we have built this concept of building careers. तो ये concept क्या है? इस concept में 4 steps हैं. We are talking about school,
We are talking about exploring and discovering the potential. We are talking about doing some pre-preparation, taking boosters to enhance capabilities, and then preparing for professional exams. तो ये चारों को मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ. First we come down to school component. ये अभी आपको सर ने समझाया, which is about 9th, 10th, 11th, 12th. So 9th, 10th is where you have taken admissions with us in various boards, either CBSE or ICSE. So I'll not spend time on that because Anubhav sir has just given you an overview into what is this component. So this section was taken in detail. तो ये हुआ स्कूल का सेक्शन. तो अगर आप समझेंगे, पहला स्टेप है स्कूल पे डिसीजन लेना, 9th 10th पे डिसीजन लेना, 9th 10th CBSE ICSE पे डिसीजन लेना. सेकंड स्टेप है डिस्कवर, फिर बूस्टर, फिर प्रोफेशनल. तो ये पिलर या ये स्टेप हमको क्लियर है. आई कम डाउन टू समथिंग कॉल्ड एज डिस्कवर. Discover is basically where we are talking about exploring, identifying what are skills that a child possess. उसके interest क्या है, उसके personality traits क्या है, उसके aptitudes क्या है. So this is more of a career counseling solution that we are talking about. हम इसको internally दिशा बोलते हैं. अगर आप ये solution समझेंगे तो after you have taken your school decision, most of the parents and students they face $1 million question. एक बहुत बड़ा question mark होता है, आगे क्या करना है. You know, let's say आज से 20-25 साल पहले जब हम कभी इस चौराहे पे थे और डिसाइड कर रहे थे, we were deciding when we were in our 11th, 12th या post 12th हमने decisions लिया था. Given the competitive scenario, given the awareness level, given the affordability and well-being levels, ये decisions बच्चों को बहुत जल्दी लेना पड़ता है. And the better, the earlier the clarity, the better is the, let's say, success rate, the better is less stress वाला area, नहीं तो बहुत stress create होता है. So Disha is one product which is basically talking about identifying and exploring. So at UT, you can go for a program called Disha, where we do career counseling, which has 3 stages. मैं quickly समझाऊंगा. This is not the right platform to get into depth, but just to tell you कि ऐसी भी एक help or program available है, where we do a big picture on careers. We do assessments, where we do personality test, multiple intelligence test, aptitude test, and interest test. इस तरह के कुछ 4 test करते हैं हम. Then you get sessions with experts where they recommend you not one but multiple careers that a child can pursue. Some where you have to choose, some where you can do in parallel. So overall, parents and students are involved. There are counseling sessions with experts. You get more than 40 pages of test-based result, जो कि objective होता है nature में. Then there are career fitments which are suggested, and a plan is developed, a roadmap is developed so that the child starts working on that plan in 9th and 10th standard, 11th, 12th standard. Again, success rate को improve करने के लिए. तो ये था second step, which is discover. हमने स्कूल देखा, हमने डिस्कवर देखा. We come down to the third step, which is called as booster. Basically, just to explain you now what is this booster, and again I'll try to be very concise here. Booster is all about, you know, preparing early for your future challenges. This is another program that is available at UT along with your school studies, where you prepare for your future competitive exams that you may face during 12th or after 12th for higher education in India or abroad. So booster, quite simply put, is 9th 10th में हम कुछ ऐसे skills को acquire करने की कोशिश करें जो हमको 11th 12th के बाद help करें. तो आपने स्कूल में एंट्री लिया, आपने एक्सप्लोर किया आपके लिए क्या अच्छा है, अब वो स्किल स्कूल के साथ साथ एक्वायर करें. सो लेट्स से, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको ये. लेट्स से योर गोल इज डूइंग engineering. Let's say you are clear with your goal, or you know you want to do engineering, or let's say you know you want to do law or design or management after 12th, or some aptitude based courses like hotel management करना है, या आपको कुछ ऐसे courses करने हैं, not engineering. Or let's say you want to go and study abroad for your undergrad, आपको बाहर जाके पढ़ना है 12th के बाद. Or let's say your goal is medicine, आपको life sciences में जाना है, medicine side में जाना है, biology, zoology, botany वो वाले side में जाना है. Let's say your broadly ऐसे कुछ आपके 4 goals हैं. अगर ये 4 goals की clarity आपको 9th 10th में है, you can start working in, you know, small steps and start acquiring some skills
तो आगे जाके आपको 11th 12th में लेस स्ट्रेस क्रिएट होगा एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. सो व्हाट आर वेरियस बूस्टर? अगर इंजीनियरिंग साइड में जाना है, जेई साइड में जाना है, आपको आईआईटीज या इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए आफ्टर 12th, from your 9th 10th onwards you can go for this booster where we call it RMO, which is Maths Olympiad. RMO is a very reputed Olympiad. हम आपसे इस पे one on one बात कर सकते हैं अगर आपका इसमें इंटरेस्ट होगा, बट RMO की प्रिपरेशन 9th 10th में चालू कर सकते हैं. This gives you all essential skills, basic foundation skills which are required for cracking especially the maths and physics part for your JEE entrances, engineering exam entrances जो आपको 12th या 12th के बाद फेस करना है. Let's say आपका interest management, law, design, aptitude based exams में है, then the booster we have is ICE, which is preparing for Indian competitive exam which are non-engineering and non-medicine in nature. तो आपको नरसिंह में पढ़ना है 12th के बाद, आपको NLUs में लॉ करना है, क्लैट एग्जाम देना है, NIFT, NID, डिजाइन इंस्टीट्यूट्स में जाना है पढ़ने, आपको होटल मैनेजमेंट करना है. यू थिंक ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि डिसिप्लिन इंडिपेंडेंट हैं, वहां पे एप्टीट्यूड टेस्ट के एग्जाम्स देने पड़ेंगे, एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे टॉप कॉलेजेस के लिए. उसकी तैयारी का बूस्टर 9th 10th में इज कॉल्ड आइस. यू वांट टू डू स्टडी अब्रॉड? स्टडी अब्रॉड इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. हम उस पर वेबिनार करते रहते हैं और आप में से कुछ लोगों ने उसको कभी अटेंड किया होगा. स्टडी अब्रॉड बूस्टर इज कॉल्ड PSAT एंड प्रोफाइल बिल्डिंग. ये 4 साल का प्रोग्राम है. RMO आइस 1 साल के प्रोग्राम है. PSAT प्रोफाइल बिल्डिंग 4 साल का प्रोग्राम है या 3 से 4 साल का प्रोग्राम है, वेयर वी नॉट ओनली हेल्प यू विद द एग्जाम दैट यू रिक्वायर आफ्टर 12th, ड्यूरिंग 12th फॉर स्टडिंग अब्रॉड, बट बिल्डिंग योर प्रोफाइल, डूइंग एक्टिविटीज, learning more courses, community services. तो पूरा प्रोफाइल बिल्डिंग प्रोग्राम है which we help students of 9th 10th अगर उनका गोल क्लैरिटी स्टडी अब्रॉड की तरफ है. Coming down to medicine, let's say you want to do medicine after 12th और आपको ये क्लैरिटी है, 9th 10th में we recommend zero booster. Zero booster कोई प्रोग्राम नहीं है, basically taking no booster at all if you have this clarity. We'll strongly advise you focus on 9th 10th. 9th 10th का बायो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें. NCERT या ICSE काउंसिल के जो सिलेबस है, all that becomes your foundation, वही आपका फाउंडेशन है उसमें. So you have to actually focus on your board exams and nothing else. So boosters are the programs that at UT we have evolved over a period of 25 years. हर साल हम इसमें improvement लाते जाते हैं. Now what you have in front of you is a very evolved program. This is seamlessly integrated with your school preparation, 9th 10th preparation. वो अभी मैं आपको next slide में बताता हूँ. This will not disturb your any other engagement. Rather, this will be an extra engagement where you're putting in small efforts in 9th and 10th so that you're ready in your 11th 12th. जब वो high level preparation में आपको जाना पड़ेगा. And lastly, we are the only institute where, and we take pride in that, where we say that we have all kinds of skill building in 9th 10th level. वरना you will have institute जो IIT preparation करते हैं और वो आपको Olympiad के अलावा और कोई aptitude test की training नहीं देंगे. We have design institute जो आपको 9th 10th के साथ सिर्फ design aptitude पे ही आपके साथ काम करेंगे. But at UT we have multiple programs where we focus on each of these because we know that these are 4 broad areas जिसमें students का interest होता है. अब ये कैसे seamlessly work करता है, हमारे यहाँ हम इसको कैसे execute करेंगे? My last slide on this. So basically there will be a screener test. This is a free screener test. If you are part of UT in any of the program, then 16th April को एक बेसिक 8th स्टैंडर्ड तक का, ये 9th और 10th दोनों के लिए, मैथ, साइंस और इंग्लिश का एक बेसिक स्क्रीनर टेस्ट होगा, पेपर बेस्ड टेस्ट होगा एट ऑल UT सेंटर्स. आप ये टेस्ट लिखेंगे, इररिस्पेक्टिव आपको क्या करना है आगे. You will write this test. After you write this test on 16th April, complete result and analysis will be done. Profiling will be done, and UT by 23rd April will give you individual report, where we will recommend, suggest and advise you what kind of booster/boosters you should enroll in. आपके लिए क्या suitable होगा basis how you have performed. क्या आपको JEE की तरफ जाना चाहिए, आपको study abroad is also
play of a lot of things, but study abroad, yeah, Indian competitive exam, given your preferences, we will be suggesting you that. After we have suggested you that, these programs will kick in. Ye programs will run only on Sundays. You can take one booster at a time. You cannot take multiple boosters at the same time. Medically भी वो advise नहीं होता, but हमारे program में भी ऐसा है, because the idea is to help the child given his other engagement. Classes सिर्फ Sundays को होंगी, 2 घंटे की classes होंगी. Classes would run from May to October. So if you see, जैसे ही board का या school exam का period November से heavy होना चालू होगा, these classes cease to exist. If you do study abroad booster for us, ये spread होगा 3 से 4 साल में. कुछ प्रिपरेशन, कुछ प्रोफाइल बिल्डिंग, कुछ सेशंस, कुछ कोर्सेज, जैसे मैंने बोला एनजीओ वर्क, हम बहुत सारा काम करेंगे, तो वो प्रोग्राम 3 से 4 साल का है. आरएमओ, आइल्स, ये सब 1-1 साल के प्रोग्राम है. मई टू अक्टूबर ये प्रोग्राम चलेंगे. तो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग इट. एंड दिस वाज द थर्ड पिलर. हमने स्कूल से चालू किया, फिर हम डिस्कवर किया हमने करियर काउंसलिंग में, फिर हमने बूस्टर्स लेना चालू किए 9th और 10th में. 11th में आके हम प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करने लगे. So at UT, just for your information, we do science integrated batches where we do science 11, 12 CBSE, state board, IIT, JEE preparation के लिए and NEET medical preparation के लिए. We do 11, 12 CBSE commerce classes करते हैं हम. ये भी professional exams हैं like CA foundation, CMA foundation, 11, 12 CBSE commerce coaching, ये सब किया जाता है. We do study abroad in 11th, 12th under professional grade, where we prepare you for various study abroad exams like SAT, like TOEFL, like IELTS. अब ये एग्जाम क्या है और इनकी डिटेल क्या है, वो हम अलग से कभी बात कर सकते हैं. And we help you with university application to US or Canada, UK, Australia, all of these places. Or you can go for aptitude-based entrance exam for Narsi Munji, Christ, Symbiosis, IIMs, IIM Indore, Rohtak, Design, CUET. इनके सबके एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. दिस इज माय प्रोफेशनल प्रोग्राम. सो ऑल इन ऑल, इफ आई हैव टू सबमिट this picture, which you may have seen in the brochures that we print and we provide during the counseling, overall, this is what I have just presented. So we believe that careers for school students rest on these 4 pillars. You'll have to take care of your school, जो कि आपने भी admission लिया है. If there is no clarity, go for career counseling, discover that. Take right amount of boosters in your 9th and 10th and go in your 11th and 12th after these professional exam preparation. So this is how things would happen. ये मैंने एक छोटे से रूप में इसको present करने की कोशिश की है. I'll stop share for a second and I'll reshare again. What I'm presenting now is एक story है हमारे universal tutorials में, और आप में से कुछ लोग शायद इस बच्ची को जानते हो. So Nilesh Bhagwat ji, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, he had used his creative best to present this story. So I'll run this story for you. This is story of a UT girl, a real UT girl. So this was like a 1-minute story. Please enjoy this and then I'll come back. Nilesh sir, मुझे confirm कीजिएगा if you are able to. Yes, sir.
Right. So thank you for watching this. So this is Resimash Sinha. Every student at UT has his or her own story. We could pick one today and we'll be happy to share more such stories. But yes, this is one. And Nilesh sir, thank you for this fabulous job. Let us go ahead. So last part, quickly कुछ results आपके साथ share करते हैं because ultimately, this gives us a lot of motivation and kick to do good always. ये हमारे कुछ बोर्ड एग्जाम्स, लास्ट बोर्ड एग्जाम्स के टॉपर्स के रिजल्ट हैं. सर्वत्र नारंग अभी 11th में IIT भी कर रहा है और SAT भी कर रहा है हमारे साथ. विशारद 10 CBSE का रिजल्ट है, 12 CBSE एंड 12 CBSE कॉमर्स. ये मैं थोड़ा सा फास्ट रन करता हूँ. दिस इज काव्या जयराम, अगेन UT के साथ ये लंबे समय से जुड़ी हुई बच्ची है. शी गॉट एन आईवी लीग. आईवी लीग उन यूनिवर्सिटीज को बोला जाता है वर्ल्ड में जो टॉप 8 यूनिवर्सिटीज हैं. So काव्या कॉर्नेल में इसको एडमिट मिला है. दिस जुलाई अगस्त शी विल फ्लाई आउट टू कॉर्नेल. अभी वो अपने 12th के बोर्ड्स लिख रही है एज वी स्पीक. सो ये दूसरे हमारे स्टडी अब्रॉड के एडमिट्स हैं. पीपल गेटिंग इनटू द हार्वर्ड्स एंड द कॉर्नेल्स, कनाडा, यू सी US, स्वीडन, जर्मनी, लॉट ऑफ प्लेसेस, UK. This is Yash Jonjale, last year's AIR 52. IIT NEET प्रोग्राम हम चैंपियंस के साथ मिलके करते हैं नवी मुंबई में एंड वी कॉल इट UT चैंपियंस प्रोग्राम. ये हमारे 2022 का लास्ट ईयर का रिजल्ट है. ही इज करेंटली इन IIT बॉम्बे. ये अभी हमारे यहाँ गेस्ट बन के भी आया था. तो दिस इज यश फॉर यू. करंट ईयर अभी जनवरी सेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 6, 7, 8 फरवरी को. तो मेंस का फर्स्ट लेग इज कॉल्ड मेंस. इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स हैं where Aryan Chaudhary is a 100 percentiler for physics, chemistry, maths, अलग-अलग results declare होते हैं. This is our commerce result. Commerce we do with our partner from Kalyan Thane area called Gurmukh Classes. तो जो वहाँ पे 20 साल से काम कर रहे हैं, तो UT उनके साथ मिलके नवी मुंबई में कॉमर्स में ट्रेनिंग करता है. And these are various results that we have in commerce. ब्रजुला सुब्रमण्यम जो आपको 97.4 12 CBSE कॉमर्स की बच्ची दिख रही है, जो हमारे यहाँ इसने टेस्ट सीरीज भी लिया था. अभी CA में टॉप किया है. She is pursuing CA now. What are various other courses we offer? So we offer engineering with champions, medical with UT champions, commerce we do with Gurmukh classes. CUET, there's paper 3 of CUET, which is general aptitude based. CUET Central University में पढ़ने के लिए 12th में एग्जाम देना पड़ता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू, बनारस हिंदू, TIS अपने मुंबई का, टाटा इंस्टीट्यूट, तो उसका एग्जाम हम करते हैं. मैनेजमेंट एग्जाम नरसिंह मुंजी IIMs का हम करते हैं. ये 10th के बाद वाले कोर्सेज हैं. एंड वी ऑफ कोर्स डू स्टडी अब्रॉड. इट इज अ बिग डिवीजन एट यू. So with this, thank you so much for coming down, listening to both of us. Thank you for putting trust in us and becoming part of this family. We'll be happy to take your questions now. Thank you so much. Anubhav sir, I am done if you are there in classroom. Yes, sir. So I'll remove myself as spotlight so that we are able to see everybody. 1 minute, sir. Now we can do a stop share and we are now ready to take question answers. मैंने stop share तो कर दिया है sir. Hi, sir. There is a question, small question. If I may ask now. Yes, Mrs. Chandra. Sir, just give me a minute. I'll first take the physical questions and then I'll take up the online questions, sir. Sure. So allow us 5 minutes. First, let's take some 3-4 questions from the physical class and then we'll go on to the online. So I hope you enjoyed. I'll just add to what Manish sir said. So I'll just say we've been running universal tutorials and हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं. जैसे मैंने बोला, मेरे 24 सालों के अंदर बहुत दुख होता है जब बच्चे सिर्फ एक वो लगा के आते हैं, घोड़े के जैसे बॉन्कर्स लगा के आते हैं और बिना कुछ सोचे समझे दे गेट इनटू IIT ट्रेनिंग या मेडिकल ट्रेनिंग में घुस जाते. एंड लेट मी टेल यू, मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं. ये जो आपको दिख रहा है इस इंडस्ट्री में बहुत बच्चे स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं. क्या स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं? वो बिना सोचे समझे वो एकदम बस भेड़ चाल में
घुस जाते हैं for these trainings without realizing whether they have an aptitude, whether they have the potential. At the end of the day, the reality is less than 0.5% students get selected. Now, we at UT are not saying कि आप उस ट्रेनिंग में मत घुसो, आप उस ट्रेनिंग में knowingly घुसो, आप उस ट्रेनिंग में with aptitude, with motivation घुसो. तो क्या विद एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन क्या आप उस ट्रेनिंग को स्ट्राइक करते हो? देन स्ट्राइक करते हो. तो अब वो कन्विक्शन कहां से आता है? जब बच्चा खुद अपने कन्विक्शन से बोलता है. क्योंकि अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि तेरे को IIT करना है तो वो बच्चा नहीं कर पाता. लेकिन जब बच्चे के अंदर से आता है, जो ये ऋषिमा की स्टोरी है, ऋषिमा इज समबडी जो नहीं मेरे को तो मेडिकल ही करना है. एंड शी गॉट अ 532 ऑल इंडिया रैंक. कोई मजाक नहीं है. 532 आउट ऑफ 15 लाख बच्चों में से लेके आना. शी इज बीन अ नॉर्मल बाल भारती स्टूडेंट. बट आई थिंक कन्विक्शन कहां से आया? कन्विक्शन आया कि हाँ मेरे को ये करना है और ये कर सकती हूँ. उससे वो कन्विक्शन. अब मेरे जो गुरु हैं अग्रवाल क्लासेस के प्रोफेसर GD अग्रवाल साहब, जो अब नहीं रहे, एंड उन्होंने मेरे को सिखाया. वो कहते हैं हम क्लासेस वाले क्या कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसे अच्छे बच्चों के लिए, हमारा कंट्रीब्यूशन शायद लेस देन 5%. बाकी वो 95% वो बच्चा करता है. बट मेरा 5% कंट्रीब्यूशन इज इन मोटिवेटिंग हिम, इन प्रोवाइडिंग हिम द राइट गाइडेंस. ये कर सकता है. सो मैं ये कहना चाहता हूं कि वी एट UT जो हमने ये वी मेक करियर्स बनाया है, इस वी मेक करियर्स में हमने क्या करने की कोशिश करी है कि वी आर अलाउइंग द चाइल्ड टू डिसाइड 9th-10th में कि तेरे को करना क्या है. नोइंगली डिसाइड कर. IPM इज एन एक्सीलेंट प्रोग्राम टू डू. पता नहीं आप कितने जनों को मालूम है कि नहीं मालूम है. तो अगर कोई सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, अगर किसी को मैनेजमेंट करना है, वेरी गुड. यहाँ पे अपने यहाँ पे NIFT है, NIT है. तो अगर बच्चों को ऐसे वाले कोर्सेज करने हैं तो वो उसमें एप्टीट्यूड है तो आप वो वाले कोर्सेज करें. यू विल डू मच बेटर इन लाइफ. देयर आर मोर स्टोरीज जो अभी बिकॉज ऑफ लॉस लैक ऑफ टाइम. आई हैड अ स्टूडेंट जिसको हमने बोला कि इंजीनियरिंग नहीं करते यार, क्लैट करिए. और वो क्लैट करने गया, ऑल इंडिया रैंक 5 लेके आया क्लैट. नाउ ही इज एट NLU दिल्ली. देयर इज अ स्टूडेंट हु वाज यहाँ पे कर रहा है, इंजीनियरिंग में घुस गया, इंजीनियरिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो रियलाइज करा क्या करना है. प्रोफाइल बिल्डिंग एक्सरसाइज स्टडी अब्रॉड में करी. तो यहाँ पे ग्रीन सोल में एक फार्म है, उसमें भेजते थे हम उसको. बोलते हैं सर एग्रीकल्चर कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता एग्रीकल्चर. तो परड्यू भेज दिया उसको एग्रीकल्चर करने. नाउ टुडे ही इज नंबर 1 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में. वहां पे इतना खुश है. सो दिस इज व्हाट इज यूनिवर्सल ट्यूटोरियल्स इन टर्म्स ऑफ वी मेक करियर सिस्टम. We are not talking about कि आप एक 1.5 साल में घुसे. आप अपना डिस्कवर करें व्हाट इज योर पोटेंशियल, उसके ऊपर फिर आगे क्षमता से काम करें. दिस इज व्हाट वी एट यूनिवर्सल ट्यूटोरियल्स. So now we are ready to take questions. So I think we'll take 5 questions from physical and then 5 questions from online. First 5 questions from physical. Please answer. Yes. No. एक एग्जाम है PSAT, वो तो 6 महीने का एग्जाम. बट बूस्टर मतलब वहां पे क्या प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत जरूरी है. सो दैट इज अ 4-year thing. So we would start from 9th standard and then continue all the way through. Lost me. So we have a program which is a 4-year. आपने जल्दी चालू किया तो we have 3 year, we have 2 year, we have 1 year. तो आप जितना समय बचा उतने में प्रोफाइल. One more, any more questions? Physical, more questions? Sir, RMO booster, it's only for 1 year, right? It's a 1 year. It's in fact not even 1 year. It's a 6 month. It starts in the month of April, continues up till October. And it's also in collaboration with Champions. RMO is done by UT professors. Champions के professors रहते हैं, but they are guest professors, but it is largely delivered by UT themselves. It is like building towards IIT, like Yes. some more. RMO अगर आप देखेंगे तो is a regional maths Olympiad conducted by Homi Baba. तो ये एग्जाम very quickly मैं बताता हूँ. I'll take this opportunity. हमने वो बोला नहीं because of lack of time. 9th, 10th, 11th में 3 बार ये एग्जाम होता है. बच्चे 3 बार लिख सकते हैं सेम पेपर. So वो बच्चा 9th में होगा या 10th में होगा या 11th में होगा, सेम पेपर आएगा. And there are 4 stages. पहले it's a district round, then a state round, then a national round, and then an international. तो आप पहले अगस्त में अगर आप सिलेक्ट होगे तो आप डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करोगे स्टेट पे, फिर उसमें सिलेक्ट होगे तो स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे नेशनल में, नेशनल में सिलेक्ट हुए तो इंटरनेशनल. ये आप 3 बार कर सकते हो. 9th स्टैंडर्ड में ट्राई कर सकते हो, 10th में ट्राई कर सकते हो और 11th में. दिस इज व्हाट इज द थिंग अबाउट आरएम.
तो हम आपको प्रिपेयर करते हैं, और उसमें भी हम ऐसा नहीं करते हैं आप बोलेंगे कि मेरे को आरएमओ करना है, मैं वो स्क्रीनर में एग्जाम में अगर वो बच्चे का लेवल होएगा तो आपको रिकमेंड करूंगा, नहीं तो मैं आपको ना बोल दूंगा, आई से नहीं, प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गो इन दी बोर्ड्स, अपन बोर्ड्स पे फोकस. It is different from the IIT JEE which is happening in the 11th. No, it's not different. See, let's understand what is IIT JEE. No, it's coaching. नहीं साहब, नहीं, IIT JEE is वो एक अलग सिलेबस है, 11th-12th का सिलेबस, वो तो अभी बच्चे ने पढ़ाई नहीं है. हम क्या ट्रेन कर रहे हैं, हम सिर्फ उस बच्चे की स्किल डेवलप कर रहे हैं. स्किल क्या है इन एग्जाम्स में, क्या है बोर्ड एग्जाम्स में एक अलग तरह की स्किल है. बोर्ड एग्जाम में स्किल इज कि आपको जो पढ़ाया, एक सिलेबस पढ़ाया, वो आपको करना आता है या नहीं. IIT JEE is कि क्या आपको लैटरल थिंकिंग डेवलप हुई है क्या, कि भाई एक सिलेबस पढ़ा दिया, एक थ्योरी पढ़ा दी, कैन यू अप्लाई दैट थ्योरी इन एन एनवायरनमेंट. तो RMO इज वन एग्जाम व्हिच एनहांसेस योर लैटरल थिंकिंग. तो हम उस लैटरल थिंकिंग को बिल्ड कर रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट वो सिलेबस तो भी पढ़ा ही नहीं सकते. इफ यू आर एन इंजीनियर या साइंस स्टूडेंट, इसको कैलकुलस नहीं मालूम है, इसको मैकेनिक्स नहीं मालूम है, तो अभी मैं IIT JEE नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं उसकी स्किल डेवलप कर रहा हूं. मोर क्वेश्चंस इन फिजिकल. Yes. Okay, this is more of a technical question. The question asked for online everybody. She's asked doubt solving at UT कैसे होती है. I'll very quickly explain. Doubt solving के 3 formats हैं. One is जैसे अपन अभी कर रहे हैं, एक क्लासरूम में जो एक टिपिकल टीचर के साथ होता है, कोई टीचर अपने क्लास में अलाउ करता है कि आप डाउट्स पूछते हो, दैट इज वन ट्रेडिशनल वे. तो बच्चे क्लास के दौरान, क्लास के पहले, क्लास के बाद में टीचर को रोक के पूछते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल. सेकंड डाउट सॉल्विंग इज दीस आर स्ट्रक्चर्ड डाउट सॉल्विंग व्हिच आर हैपनिंग एवरी थर्ड संडे एंड एवरी फोर्थ संडे ऑफ द मंथ. आप डाउट सॉल्विंग की आपको 20-20 मिनट्स के स्लॉट्स अवेलेबल हैं, आप टीचर के साथ इंडिविजुअली बुक कर सकते हो एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स. दीस आर स्ट्रक्चर्ड सेशंस. तीसरा इज आपके डाउट्स ज्यादा हैं, सो यू कैन डिमांड एन एक्स्ट्रा लेक्चर. तो अगेन दिस इज आपको वेबसाइट पे एक लिंक है, एक्स्ट्रा लेक्चर डिमांड करिए. मैं अनुभव सिन्हा, मेरे को फिजिक्स में उदय सर के साथ इस चैप्टर पे डाउट है, मेरे को एक हाफ एन आवर का सेशन चाहिए, देन सर वुड बी अवेलेबल टू यू ऑन one-on-one फॉर एन ऑनलाइन डाउट. सो दीस आर द 3 ways टू. सर मैं एक ऐड करता हूँ इसमें. यस. इसमें जो सर ने बताया वो 3 तरीके हैं. द फोर्थ तरीका फॉर डाउट सॉल्विंग स्पेशली फॉर मैथ्स एंड साइंस इज, हमारे यूटी में एट यूटी वी रन दिस कॉन्सेप्ट. जो बच्चे 9th से 10th में आ रहे हैं यूटी में, जिन्होंने 9th में ज्वाइन किया था वो जानते हैं. वी डू समथिंग कॉल्ड एज MEPS एंड SEPS, विच इज मैथ्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन एंड साइंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन. तो आपको आपके ब्रांच पे एक फैकल्टी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन अवेलेबल रहेगा. वो बच्चा अपनी क्लास के लिए आ रहा है, फिर वो सेशन में जाके उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी से शीट बेस्ड अपने डाउट्स पूछ सकता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकता है और बिल्ड कर सकता है उस कॉन्सेप्ट को. उसने पढ़ लिया पहले यूटी क्लास में, अब वो उस सेशन में बैठ के मैथ्स और साइंस को और इंप्रूव कर सकता है डाउट सीकिंग एंड सॉल्विंग और प्रैक्टिस से. दैट्स ऑल सर, थैंक यू. मोर क्वेश्चंस. Boosters, yes. Question was, if you are only registered for test series, can you get the booster service? Yes. But you cannot get the booster service, yes, but you cannot avail the MEPS, SEPS because these are for coaching students. Yes, that is available for test series also. Yes, that you. Okay, now let's take up online doubts, online questions. Okay, sir. So actually, sir said that around April, I think on 8th standard itself, there is an assessment test kind of a thing is conducted, which is probably aptitude, the psychometric, and a combination of other assessments, wherein you try to identify probably a good fit or interest area or capability and so on and so forth for the child to suggest and align to him or her to a specific kind of or help him select the interest area for a good fit for the career. Now, my question is, 8th, everybody is coming from different schools, different guidance, and wouldn't it be a right point after going through everybody coming to the same platform, 6 months of class in UT, and then probably conducting the test? I mean, it is just a thought.
Okay, so I will lead, sir, and आप ऐड कीजिएगा. So, Mrs. Chandra, मैं इसमें थोड़ी सी clarity देता हूँ. There are two things. One is called discovery, which is career counseling, and the other is booster. जो डिस्कवरी या करियर काउंसलिंग है वो कैसा प्रोडक्ट है, वो जब आंख खुले तब सवेरा वाला प्रोडक्ट है. उसका कोई डिफाइंड पीरियड नहीं है कि आपको करियर काउंसलिंग कब करना है. You could do it today, you could do it 6 months after, you could do it even, let's say, a year after. उसका कोई डिफाइंड डेट नहीं है. करियर काउंसलिंग इज वन ऑन वन, where you sit with expert, try and understand career scenarios, you do some assessments, parents and बच्चे की प्रोफाइल के लिए, आप कुछ टेस्ट लिखते हैं और फिर आपका अगेन वन ऑन वन सेशंस होते हैं फॉर सजेस्टेड करियर्स. तो दैट इज करियर काउंसलिंग. उसका वन डेट नहीं है. वो आप 8th में करो, 9th में करो, 10th में करो, whenever you want to do it, you can do it. The test that I suggested on 16th April, that particular test is for booster. वो booster कौन सा आपको प्रोग्राम लेना चाहिए, वो उसका टेस्ट है. Because it is a structured, well-designed program जिसमें number of hours हैं, जिसमें skills build किया जाएगा, उसका एक definite start date है. So we will start it in first week of May. जैसा सर ने कहा था वो 6-7 महीने चलेगा. अक्टूबर में it will come to an end. Then you will write your exam. अगर 9th-10th में आपके कोई एग्जाम है तो आप वो लिखेंगे. So these two are two different things. Career counseling एक अलग चीज है जो कभी भी कर सकते हैं, वो वन ऑन वन होगा, और बूस्टर प्रोग्राम्स हैं स्किल बिल्डिंग के, उनका डिफाइंड डेट है. Right. My only worry was that since these are very big decisions to choose for the discipline, whether the child would be prepared to take at that point before even going No, to these are not big decisions. Don't make them big. Big decision would be IIT का एग्जाम लेना would be a big decision. This is, ये हम ट्राई करने के लिए भी, अगर आपके बच्चे ने, जैसे मैं एक बच्चे का बोलूंगा, I would give an example of one student. His name is सर कामेश के बच्चे का क्या नाम है, मेरे को नाम ही नहीं आ रहा मुंह पे. Anshul Mangal. There was this boy. Oh, he happens to be my wife's brother's son. तो अब हमारे घर में ही है. Last year he was in 9th grade. ये बूस्टर का, मैंने बोला नहीं उसको बोलना बूस्टर लिखेगा, बूस्टर स्क्रीनिंग एग्जाम लिखेगा. अब यूटी में करीब 2000 बच्चे वो बूस्टर का एग्जाम लिखते हैं, स्क्रीनिंग एग्जाम लिखते हैं. अब he was absolutely, जैसे ये चंद्रा मैम ने बोला कि वो, so he is not thought about it. अब हमारे घर में ही है, मेरे साले का बेटा है, but they have not thought about it. नहीं, but मैंने लिखवा दिया बूस्टर स्क्रीनिंग एग्जाम लिखा तो 2000 में he came in the top 50. That became an eye opener for them. अरे यार इसमें कितनी स्किल सेट है, क्योंकि 2000 बच्चों में अगर ये टॉप 50 में आ रहा है तो he has a skill set, he's got a definite. now उसको एक ओपनिंग मिल गई, वो प्रिपेयर्ड या नहीं, मैंने बोला जैसा भी है, बिकॉज़ बाकी कौन से बच्चे प्रिपेयर्ड है, एवरीबॉडी इज इन द सेम बास्केट. सो मैम डू नॉट बहुत ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस मत दीजिए. वो एग्जाम इज कि क्या आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, 9th में अपॉर्चुनिटी है, 10th में अपॉर्चुनिटी है, उस एग्जाम में आपको एक कुछ मालूम पड़ेगा, एंड देन वो जो प्री ट्रेनिंग करेगा उसमें थोड़ा सा और बेटर होएगा. इट इज जस्ट अ स्टार्टर, नॉट गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. और जैसे सर ने बोला आपको करियर के बारे में बात करनी है तो वो आप स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट, जब भी आप रेडी है, whenever you are ready, you can take it. You can take it in 8th, you can take it in 9th, you can take it in 10th, and वो आप जब भी चाहें तब आप ले सकते. Sure. Thank you. More questions? Hello. Yes, Mrs. Sonavani, please go ahead. Yeah, I had a doubt. I have enrolled my child who's in 10th grade for the UT program. Okay, but now I have a daughter for last year for whom I took the test series. So can they both appear for the screening test? So your daughter is in 12th standard now? She is in Sonavani? 11th. She's giving 11th exams and she'll go in 12th next year. 11th going to 12th है, अनुभव सर. नहीं, not for that screening मैडम. आप इंडिविजुअली आके मिलिए फॉर करियर थिंग. आप हमसे इंडिविजुअली मिलिए, बिकॉज द स्क्रीनिंग उसके लेवल का नहीं है बच्ची के. शी इज गॉन बियॉन्ड दैट, सो देयर इज नो पॉइंट शी टेकिंग दैट स्क्रीनिंग. आप इंडिविजुअली मेरे से और सर से मिल लीजिए, एंड वी कैन हेल्प यू विद द करियर डिसीजन. हम आपकी हेल्प कर सकेंगे जो आपका ऑब्जेक्टिव है. Okay, and one more thing was, like in May, my child is in DPS, and now our exams are getting over tomorrow, and then the next session is starting from 9th March. 10th is starting from 9th March. Okay, so now the whole in March they'll be having the school.
in April and in May UT. So at least a 2-3 days break, because I don't want to miss his classes or school. But at least a 2-3 days break which a UT can give us, so that at least we can give a child a break in the May session. It मैडम वो would आप be helpful. इंडिविजुअली आके मेरे से मिल लीजिएगा. आई विल बी एबल टू टेल यू कौन सा लीन पीरियड है जब आप वो ले सकते हैं. ये एक Okay. चैलेंज रहता है एंड आई वुड से कि वो आप मेरे से इंडिविजुअली आके मिलेंगे. So we may able to find a customized solution जहाँ पे शायद क्लास चलती रहेंगी, but we'll provide you one-on-one कुछ आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप वो ब्रेक जरूर लें. ये दिस इज समथिंग वो जो मैंने शुरू में बोला ना, वेलबींग. पहले ये ना हमारे पास रिक्वेस्ट आती थी, ना हम उसके लिए तैयार रहते थे, ना हम ये आंसर करते थे. बट नाउ आर वी केपेबल? यस वी आर केपेबल. एंड मैं आपको जरूर कुछ अच्छा सोल्यूशन बना के दूंगा उसको. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. More online questions? No, sir, I think we are done here. Okay, so then we are done. I hope you enjoyed this session, got some value out of it. And we look forward to meeting you in the month of March end and continuing this wonderful journey with COVID. Thank you very much for coming here and gracing the occasion today. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Anybody who's not signed the attendance, please make sure you sign it.